Hi friends, in this session we'll start with the representation of equilibrium constant. So we already discussed what actually means by Kc in previous session. So for a balanced chemical reaction, A of A plus B of B gives C of C plus D of D. In this reaction, capital A and B are the reactant, capital C and capital D are the product. Small a and small b are the coefficient of the reactant, and small c and small d are the coefficients of the product. So how can we write the Kc? Fine. So according to the law of mass action, the constant value obtaining related to this equilibrium concentration of reactant and product are known as equilibrium constant. So rate of forward reaction के लिए हम क्या लिखेंगे? Kc. लास्ट सेशन में हमने क्लियरली समझाया था प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल सी इंटू कैपिटल डी, बट सी एंड डी देयर कोएफिशिएंट, तो सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी. अब मान लीजिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो तो दैट इज के डैश सी. दिस इज स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए नाउ दिस becomes your product, this becomes your reactant. कैसे? फॉरवर्ड के लिए क्या होगा? A और B में से फॉरवर्ड डायरेक्शन में C एंड D बन रहा है. नाउ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C एंड D में से A एंड B बन रहा है. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माने A एंड B undergoes chemical reaction, you get C and D, and rate of backward reaction माने C and D is converted into A and B. So K dash C is nothing but 1 upon Kc. 1 upon Kc का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर लीजिए. A to the power A, B to the power B डिवाइडेड बाय C to the power C, D to the power D. एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो शायद कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. H2 plus I2 gives 2HI. So here in case rate of forward reaction is Kc. Kc is nothing but HI raised to 2. Why? Because the coefficient goes to the power. Product concentration divided by the reactant concentration. These are the reactant, that is H2 into I2. But rate of backward reaction अगर आपको मेजर करना हो तो rate of backward reaction is nothing but K dash C is equal to 1 upon Kc. This is H2 into I2 divided by HI raised to 2. So this is all about your Kc and K dash C. Fine. So this is the relationship between the equilibrium constant. This is rate of forward reaction, this is for rate of backward reaction. If rate of forward is equal to rate of backward, both are same, system is in equilibrium. So let's take types of chemical equilibrium. There are two types of chemical equilibrium, that is called is homogeneous and heterogeneous. Once again ये word आपने सुने हुए. homogeneous means same phases, heterogeneous means same phases. But here in case this in terms of equilibria, तो we'll discuss first what actually means by homogeneous equilibrium. define करेंगे और उसका एक एग्जांपल याद रखेंगे. हो सके तो 2 एग्जांपल याद कर लीजिएगा तो आप मिनिमम एक लिख सको. Likewise we'll define first what actually means by heterogeneous equilibrium and then you write down the example. Let's start with what actually means by homogeneous chemical equilibrium. In this type, the reactant and the product of chemical equilibrium are all in same phase. Once again, in this type, the reactant and product of chemical equilibrium are all in same phase. That is entitled as homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium can be further divided into 2 classes. Reaction in which the number of molecules of the product is equal to the number of molecules of the reactant. For example, H2 plus I2 gives 2HI, means number of reactant and product दोनों सेम है. 1 1 2 सामने 2 बन रहा है. N2 plus O2 gives 2NO. Once again 1 plus 1 2 सामने 2 बन रहा है. All are in same phase, gas 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 gas. Now the reaction in which the number of molecules of the product is not equal to the total number of reactant molecule. See here in case all are in same phase, but number of moles of reactant is not equal to number of moles of product. Means 2 SO2 plus O2 gives 2 SO3. 2 plus 1 is equal to 3, but सामने क्या बन रहा है? 2 SO3.
तो लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ मोल्स एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है. COCl2 1 mole, when decomposed you get 1 mole of CO plus 1 mole of Cl2. So here in case also number of moles same नहीं है, otherwise all are in same phases, that is called as in gaseous phase. So this is all about your homogeneous equilibria. Next we moved on to this heterogeneous equilibrium. What is there in heterogeneous chemical equilibrium? In this type, the reactants and the product of chemical equilibrium are present in different phases. A few example, CO2 plus C. देखिए CO2 is in gaseous, but carbon is in solid form. You get 2CO. CaCO3 is in solid form. When it's decomposed, you get CaO plus CO2. CaO is in solid, CO2 is in gas. So once again, in this type, the reactant and product of chemical equilibrium are present in different phases. CO2 plus C gives 2CO. CaCO3 gives CaO plus CO2. Thus, the different types of chemical equilibrium based on this phase of reactant and phase of product. So this is all about your homogeneous and heterogeneous. Write a short note on homogeneous and heterogeneous equilibria पूछेंगे 2 मार्क या 3 मार्क के अंदर. डेफिनेशन दीजिए, कम से कम एक एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क कट हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम. नाउ टिल टाइम विल डिस्कस अबाउट Kc. C stands for concentration. Now concentration solid and liquid का होता है, तो सर व्हाट अबाउट गैस, व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम इन गैसियस पार्ट? तो गैस का प्रेशर होता है. दोस्तों गैस कभी भी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होता है, गैस प्रेशर में होता है. सो इफ योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इज इन गैसियस फॉर्म, तो इंस्टेड ऑफ Kc वी हैव टू राइट डाउन Kp. P स्टैंड्स फॉर प्रेशर और Kp जनरली यूज करेंगे गैसियस सिस्टम के लिए, वाइल Kc हम यूज करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड के लिए. मीन्स जहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा वहां पे Kc, जहां पे प्रेशर टर्म आएगा वहां पे Kp. नाउ प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली विल स्टार्ट विद अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन. व्हाट इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to nRT. Once again derive each and every term. What actually means by P? Pressure, V, volume, N, number of moles, R, gas constant, T, absolute temperature. Now V goes to this denominator, that is P is equal to N by VRT. So P is equal to CRT. Once again, according to ideal gas equation, PV is equal to nRT, P is equal to N by VRT, so P is equal to CRT. Now C is nothing but the concentration. Concentration is always mole per liter. So now pressure is equal to concentration into R is gas constant and T is absolute temperature. If our chemical reaction is carried out at constant temperature and R is gas constant, so can I write pressure is directly depending on the concentration of gas? Yes or no? दोस्तों यहां तक पता चला P is equal to CRT. C stands for concentration. Concentration N by V is equal to concentration. R gas constant, T absolute temperature. If our chemical reaction is carried out at constant temperature, R gas constant है जिसकी वैल्यू है 0.0831. So if these two terms are constant, so can I write pressure is directly depending on concentration of gas? Yes. So let's start one chemical equilibrium और derivation करते हैं Kp and Kc के लिए. So let's start. H2 plus I2 gives 2HI. If I want to write Kc for this reaction, can I write HI raised to 2 divided by H2 into I2? Means product concentration divided by the reactant concentration, or all are in gaseous form. So instead of C can I write P? So Kc प्रेशर के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 into प्रेशर ऑफ I2.
Now in above equation we derive P is equal to CRT. So जहां जहां PHI, PH2, PI2 है तो ये सारे के सारे टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे? P is equal to CRT. So जहां जहां P है मीन्स PHI का मतलब क्या हुआ? Concentration of HI into RT. Next, what actually means by PI2? PI2 is nothing but the concentration of I2 into RT. What actually means by PH2? Concentration of H2 into RT. Now put all this value in above equation, means this equation. If you put all this value in above equation, what we get? We get this. Kp is equal to PHI raised to 2 divided by PH2 into I2. अब PHI क्या है? HI into RT. So HI raised to 2, RT raised to 2. H2 RT into I2 concentration into RT. Now ये concentration सारे टर्म जो है वो एक साइड ले लीजिए और RT टर्म अनदर साइड ले लीजिए. Concentration term one side, RT on another side. Kp is equal to HI raised to 2 divided by H2 into I2, RT raised to 2, RT into RT. So basically RT cancel out, means this whole term will goes out. What is left? Kp is equal to Kc. Why? Because this is nothing but Kc. Kc is nothing but product concentration divided by the reactant concentration. So here in case अब Kp और Kc दोनों सेम हो जाएगा. किसके लिए? Where the number of moles of reactant is equal to number of moles of product. Reaction क्या था दोस्तों? H2 plus I2 gives 2HI. H2 का कोफिशिएंट 1 plus I2 का कोफिशिएंट 1 is equal to 2HI. Means number of moles of reactant is equal to number of moles of product. At that time Kp is equal to Kc. But this is not the case. सारे के सारे स्पीशीज के अंदर ऐसा नहीं होगा. इसीलिए हमें एक और एग्जांपल भी पढ़ना पड़ेगा. That is N2 plus 3 mole of H2 gives 2 ammonia. देखिए अब यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है. 1 plus 3 is equal to 2. तो यहाँ पे क्या होगा? Let's discuss. So for a chemical reaction, N2 plus 3 mole of H2, you get 2 mole of ammonia. Kp is nothing but PNH3 raised to 2, coefficient goes to the power, divided by PN2 PH2 raised to 3, NH3 raised to 2, RT raised to 2, divided by N2 into RT, H2 raised to 3 RT. Once again, this concentration term are one side, RT on another side. So NH3 raised to 2, N2, H2 raised to 3. This is nothing but Kc. And this RT raised to 2, RT raised to 4. देखिए कैसे? 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, टोटल 4 और यहाँ पे 2 है. So ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? RT raised to minus 2. So what we have? Kp is equal to Kc, RT raised to minus 2. As Kc is equal to NH3 raised to 2 divided by N2 into H2 raised to 3. तो सर सभी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें कितना सारा याद रखना पड़ेगा? कोई जनरलाइज फॉर्मूला है कि नहीं है? तो लेट्स स्टार्ट और लेट्स डिराइव जनरल केमिकल इक्वेशन ऑफ Kp एंड Kc, और दिस इज आल्सो नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. So once again we'll start with A of A plus B of B gives C of C plus D of D. Capital A and B are the reactant, capital C and capital D are the product. Small a and small b are the coefficient of the reactant, small c and small d are the coefficient of the product. So Kp is equal to Pc raised to C, Pd raised to D divided by Pa raised to A, Pb raised to B. Now P is equal to CRT, तो concentration के टर्म में लिखना पड़ेगा. तो C raised to C, D raised to D divided by A raised to A, B raised to B, and RT raised to C plus D divided by RT raised to A plus B. Now this is nothing but Kc. So what is left in this side? RT raised to C plus D minus A plus B. So this is all about your general formula.
अब c प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये सब चीज क्या है, इसको और कट शॉर्ट करते हैं। c प्लस डी क्या है, c प्लस डी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड a प्लस b क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? So Kc is equal to C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power B. So our final equation Kp is equal to Kc RT raised to delta Ng. Ng क्यों लिखा सर? G stands for gaseous. क्यों? क्योंकि हम Kp के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। What actually means by delta N? Delta Ng is nothing but Np minus Nr. Now sir NP क्या है? NP is number of moles of product minus number of moles of reactant. So this is the general formula. Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng. अब कोई भी केमिकल इक्वेशन हो आप Np minus Nr करके डेल्टा Ng की वैल्यू ढूंढ सकते हो and that goes to the RT raised to the power. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आज पढ़ा, केपी के सी रिलेशनशिप। फाइन, 3 मार्क या 4 मार्क के अंदर ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। सो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मिनिमम 2 बार लिख लीजिएगा, ये वीडियो को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा, राइट डाउन ट्वाइस, देन एंड देन यू गो थ्रू विथ केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी रेज़ टू डेल्टा एनजी। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। थैंक यू।